Dear students, I am starting this chapter, Economics, lesson number 2, sectors of Indian economy. And the first topic is sectors of economic activities. Now, let me tell you first of all, what is the meaning of this heading? In my first video related to lesson 1 of economics, I told you that economics for which you are studying in class 10 or you studied in class 9, it is just a very drop in the ocean. Economics is a very promising subject with very promising future and very promising professional opportunities for you. Those who have got application based mind and don't want to pursue in science, they can pursue in eco honors. जिनके पास बहुत अच्छे ब्रेन्स हैं पर साइंस नहीं लाइक करते, मेरी सजेशन है ये स्टूडेंट्स दे कैन गो फॉर इको ऑनर्स. In the long run it is very promising. Now coming back to the subject, that sectors of Indian economy, what do you mean by this word sectors of Indian economy? Sectors, my dear students, जैसे आपके sections divide होते हैं, इकोनॉमी को इकोनॉमिस्ट ने for proper studies they have divided into 3 sectors: primary sector, secondary and tertiary sector. About these sectors in detail you are going to study in this chapter. So this was the introduction of the heading which I just told you. And now starting with this chapter, there are many activities. देखिए बहुत एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमी एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं, पर उसको बहुत क्लियरली क्लासिफाई करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने this system and this solution they have made. And for example, the cultivation of cotton, there are many activities directly using natural resources, means जिसमें natural resources को directly use किया जाता है. आप देखिए at present अगर मैं कहूँ मैं क्लास ले रही हूँ, I'm not using any natural resource, rather I'm not using natural resource but I am using technology. So those activities where natural resources are directly being undertaken, and it is called primary activity. For example, cultivation of cotton, कोई भी किसी भी क्रॉप कल्टीवेशन, it takes place within a crop season, but we depend mainly but not entirely on natural factors. आप देखिए जैसे natural factors कौन से, rainfall, sunshine and climate. Product of this activity is a natural product. Cotton देखिए naturally grow किया जाता है, and we are dependent on biological process of animals also and availability of fodder also. So the product here, milk, natural है, minerals and ores, जो ore से जो mine से निकाले जाते हैं, that is natural, primary sector. So the definition of primary sector is when we produce a good by exploiting natural resource, it is called primary activity. This sector which uses the produce or a good by exploiting natural resource, this sector is called primary sector. Why primary? आप देखिए आपने primary classes करके आए basic. So primary means because it forms the base for all the activities, all the products that we subsequently make. Since most of the natural products we get, they are from agriculture, dairy, fishing, forestry. This sector is also called agriculture and the related sector. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप प्राइमरी सेक्टर आपको क्लियर होगा. मैं एक बार आपको ये पिक्चर से भी आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, ये क्रॉप्स के बारे में दिया गया है. देन एनिमल्स, दैट काउ इज गिविंग मिल्क, एंड देन कोल माइनिंग, और ये ट्री. तो नेचुरल गुड्स, कोई भी एक्टिविटी जो नेचुरल गुड्स को यूज कर रही है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी. नाउ द सेकेंडरी एक्टिविटी. आप देखिए बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होती है, स्टूडेंट से बता दो आपको, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री में. सो डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, इट इज अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है ये. नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंडरी सेक्टर. द सेकेंडरी सेक्टर,
Yes. Now I am coming to the secondary sector. Now, what is secondary sector? Secondary sector covers activities in which natural products are changed, are manufactured, and they are changed into the secondary product. जैसे इस समय आप लोग सेकेंडरी क्लासेस में हैं, प्राइमरी पढ़कर आए आप, मिडिल पढ़कर आए आप, और सेकेंडरी में है. सो द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज, नेचुरल प्रोडक्ट्स को अदर फॉर्म में चेंज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्टर, और इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो. इट इज अ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी. द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, ये नेचर में प्रोड्यूस नहीं किया जाता, but has to be made, and therefore some process of manufacturing जो है it is essential. And this could be कोई भी फैक्ट्री में, लाइक कॉटन प्लांट है आपकी, कोल इंडस्ट्री है, मिनरल्स की कोई भी इंडस्ट्री है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर. इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कई बार कंफ्यूजन होती है. फॉर एग्जाम्पल, यार्न वीव होता है, शुगर या गुड़ बनाया जाता है, ये सब सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज हैं. दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, और वो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे. और वो इंडस्ट्रीज नेसेसरली विल नॉट बी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, दे मे बी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑल्सो, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे. सो हर किसी चीज का इंटरकनेक्शन है. नाउ आई एम कमिंग टू tertiary sector. Now, what is tertiary sector? After primary and secondary sector, there is a third category that is called tertiary sector. For example, providing services. आपके स्कूल में टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, they are giving you services, that is called tertiary sector. These are the activities that help in the development of primary and the secondary sector. And these activities by them ये कुछ produce नहीं कर रहे. Like teachers are not producing anything, doctor is not producing anything, but they are connecting. Transport है, second ये tertiary sector है, it is connecting primary and the secondary sector. मैं कई बार स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देती हूँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को समझाने के लिए. फॉर एग्जांपल, आपके इधर से जा रहे हैं, कभी हरिद्वार जा रहे हैं, रास्ते में आपको कई बार शुगर मिल्स वगैरह मिलती हैं. एक तरफ आप सामने देखते हैं शुगर फील्ड्स होती हैं, शुगर केन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. तो शुगर मिल्स एंड शुगर केन्स व्हेन दे आर प्रोड्यूस, वो प्राइमरी सेक्टर हो गया. सामने उसके शुगर फैक्ट्रीज हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया. और बीच में रोड पे आप देखते हैं कई बार ट्रक में शुगर केन्स जो हैं वो जा रहे होते हैं, दैट इज टर्शियरी सेक्टर. सो प्राइमरी, secondary and tertiary sector, these are activities that help in the development of primary and secondary sectors. And these activities, they do not produce anything, but they actually coordinate the primary and the secondary sector. अगर आप देखिए ट्रक्स की स्ट्राइक हो जाती है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं, ट्रक्स स्ट्राइक कर देते हैं, या ट्रेन्स जो हैं वो बंद हो जाएंगी, तो आप देखिए क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे. दैट मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में कोई हलचल नहीं हुई है, बट जो भी हलचल हुई है वो टर्शियरी सेक्टर में हुई है. एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन्स. सो गोडाउन्स में भी इनको स्टोर करना जरूरी है, तो उसमें भी टर्शियरी सेक्टर की जरूरत होती है. वी मे ऑल्सो नीड टू टॉक अदर सेक्टर्स ऑल्सो टर्शियरी सेक्टर के साथ जो एसोसिएटेड है. फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन है, देन बैंकिंग है, एंड लाइक आपको मैंने बताया मेडिकल सेक्टर है, इन्यूमरेबल. अर्बन एरियाज में आपको प्राइमरी सेकेंडरी नजर नहीं आएंगे, बट इन अर्बन एरियाज you will be able to find only the tertiary sector mainly. Now service sector, mainly, not only but mainly in the secondary sector and tertiary sector you will be able to see. So this is called service sector, as the sector provides services. Service sector also includes some essential services that may not directly help in the production. For example, teachers की जरूरत होती है, डॉक्टर्स की, और पर्सनल सर्विसेज, वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, आपके घर में मेड्स आ रही हैं, ये सब सर्विसेज दे रही हैं आपको. और न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन आईटी, एटीएम बूथ्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं. ये सब टर्शियरी सेक्टर में का ही पार्ट है ये. So I hope students you must have understood, and during the revision we will take up this exercise.
जब मैं आपको एक रिवीजन वीडियो जो है वो करूंगी मैं। नाउ कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आप डिटेल में जब आप 11th 12th में जाएंगे वहां पे आपका वो आएगा ये, हाउ वी कैन कंपेयर the various production activities in primary, secondary and tertiary sector produce a very large number of goods and services, and in an economy there could be one or more sectors which are dominant। अगर हम total production की बात करें, how do we count, हम इनको काउंटिंग कैसे करते हैं, किस सेक्टर में कितना हुआ ये काउंट कैसे किया जाता है। with so many thousands of goods and services they are produced, बहुत ज्यादा, नॉट ओनली टास्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इनॉर्मस है, छोटी से छोटी चीजों को भी उसमें कैलकुलेट किया जाता है। और यू आर राइट इन थिंकिंग, सो टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं कि वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज should be used rather than adding up the actual numbers। What is the meaning of this? Final value of goods and services are used। जैसे आपने ब्रेड ली, ब्रेड में हर चीज के इंग्रेडिएंट्स की वैल्यू होती है पर वो फाइनल गुड में एडिड होती है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 kg ऑफ व्हीट, ये बुक में जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, 8 पर केजी उसको सेल किया गया, तो वैल्यू ऑफ व्हीट विल बी ₹80,000। द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट, ₹10 पर कोकोनट, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 50,000। इकोनॉमिस्ट जो है वो इस तरीके से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सेक्टर्स कैलकुलेट होते हैं, ऐड किया जाता है इनको, और ऐड करके इनकी वैल्यू निकाली जाती है, जिससे पता चलता है कि कौन से सेक्टर का कौन इकोनॉमी में, एक कंट्री की इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। there is one precaution one has to take, और वो क्या है, that the it is produced and sold needs to be counted। it makes sense only to include final goods and services। final का वर्ड मैंने अभी भी समझाया, इस एग्जांपल से मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। a farmer sells wheat to flour mill 8 पर केजी, मिल उसको आटा बनाती है उसका, और वो बिस्किट कंपनी को भेजती है 10 पर केजी में। बिस्किट कंपनी उसको यूज कर कर और बिस्किट का पैकेट सेल करती है, वो कंज्यूमर्स के पास आता है 60 रुपीज में। तो इट सेल्स अ बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फॉर 60 रुपीज। बिस्किट्स की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जब कंज्यूमर तक पहुंचता है उसकी कॉस्ट 60 है, इकोनॉमी में वो 60 रुपीज काउंट होगा। अलग अलग स्टेजेस में जो बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट है वो नहीं काउंट होती। सो व्हाई आर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटिंग। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्यों। इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल goods and services such as wheat and wheat flour in this example are intermediate goods। intermediate goods means like आप intermediate, in between फॉर एग्जाम्पल आपके अगर टीचर एब्सेंट होती है तो सब्स्टिट्यूशन टीचर आती है ना, तो इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स। Hence, the value of ₹60 जो बिस्किट की वैल्यू है उसमें सब चीजों की कॉस्ट इंक्लूडेड है, whether it is wheat, whether it is flour, whether it is bakery, whether it is like sugar, everything is included। To count the value of flour and wheat separately करेक्ट नहीं होगा, उससे डुप्लीकेशन हो जाएगी और कैलकुलेशन और डाटा हमारे पास क्लियर नहीं आएगा। So first as wheat and then as flour, finally as biscuit। Value of final goods, this is very important, and from the examination point of view GDP की definition भी है ये, that the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year, and the sum of production in these three sectors ये GDP हमें देता है। आजकल आप बहुत ज्यादा जीडीपी के बारे में सुन रहे होंगे। इंडिया की जीडीपी डाउन है, फॉर दैट मैटर इंडिया से भी ज्यादा इफेक्टेड है अमेरिका की जीडीपी, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जीडीपीज ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन वो डाउन हो गई है, और अभी इट विल टेक मोर टाइम फॉर स्टेबलाइजिंग ऑल्सो। सो जीडीपी इज वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर। देखिए इसको डेफिनेशन को आप अलग अलग पार्ट्स में याद कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक पार्ट,
produced in each sector. दूसरा part, during a particular year. Third part, provides the total production of sectors for that year. So this is called GDP, and it is the value of all final goods and services within a country and during a particular year. GDP is calculated in a particular year. In India, the mammoth का मतलब होता है very important task of measuring GDP. Central Ministry करती है, Finance Ministry करती है with the help of various government department. नीति आयोग is one of that department जो प्रोड्यूस इसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. Historical changes in sectors. Generally, it has been noted from the histories now developed countries that at initial stages of development, primary sector बहुत important था. इंडिया में भी आप देखिए स्टार्टिंग में ये टॉपिक जो है ये बता रहा है कि कैसे हिस्टोरिकली चेंजेस आई इन सेक्टर्स. Methods of farming change हुए, agriculture sector prosper हुआ, it produced much more food than before, and many people they could now take up other activities, and there were increasing number of person traders. अब इसकी बड़ी practical आपको example देती हूँ. आपके घर में जैसे आपने देखा होगा ये वॉशरमैन आते हैं या मेड्स वगैरह आते हैं, ये सब दे बिलोंग टू विलेजेस. क्योंकि गांव में I'm not talking about all the villages of all the states, but in many villages of few states like Punjab hai, Haryana hai, Maharashtra hai, Karnataka hai, farmers are using, and many other also. I might have missed, and certainly I have missed some states जहाँ पे अब production methods जो है वो modernize हो गए हैं. So because of the modernization of agriculture, now farmers जो हैं they are producing more with modern techniques. So not many people are required. तो जब बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत एग्रीकल्चर में फार्मिंग में नहीं है, so they are now shifting to cities for another type of job. So many people now they could, इस sentence को समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया है that many people could now take up other activities. There are increasing number of craftsmen, traders, and now transporters. Then many villages, people, children, they are going in army. At this stage, most of the goods produced, natural products, say primary sector में, most people were also employed in this sector. But now population employment is less in this sector, and the over a long period of time, अगर मैं कहूँ तो long मतलब 100 years, because of new methods of manufacturing were introduced, factories जो हैं वो expand होने लगी. Those people जो who had earlier जो पहले agriculture में थे अब वो secondary में shift हो गए. People began to use many more goods that were produced in factories at cheaper rate, and secondary sector जो है वो gradually became the most important in total production and employment. Hence, over time, a shift had taken place. This means that importance of the sectors जो है वो change हो गया. In the last 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. Service sector has become the most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in service sector. This is the general pattern observed in developed countries. What is the total production and employment in three sectors in India? Total production क्या है? Total over these years there have been changes similar to the pattern जो हमने developed countries में देखा. इंडिया में भी जो आजकल अगर आपने किसान बिल के बारे में पढ़ा हो, वैसे मैं एग्रीकल्चर चैप्टर लूंगी तब बात करूंगी आपसे इसकी. इंडिया में जो ये किसान बिल जिसके ऊपर फार्मर्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया और बहुत ह्यू एंड क्राई किया, और एक्चुअली में ये कुछ माफियाज हैं जो एग्रीकल्चर में हैं जो ये नहीं होने देना चाहते, राकेश टिक्कत जैसे. एंड ये डेवलपमेंट जो है एग्रीकल्चर में अभी और कंट्रीज में आ गई है, डेवलप कंट्रीज में, हमारी कंट्री में उसी डेवलपमेंट को लाने की बात किसान बिल में हो रही थी. सो नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन आई एम कमिंग एंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर. जीडीपी आप देखिए कंपैरिजन में, ये ग्राफ आपको समझा दूं जो बहुत जरूरी है समझना. ये आप देख रहे हैं इंडेक्स, प्राइमरी सेक्टर ब्लू कलर से, सेकेंडरी मैरून, एंड दिस इज टेरिशरी सेक्टर ग्रीन कलर. अगर आप देख रहे हैं 73-74 में प्राइमरी सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, और अभी आप अगर देखेंगे टेरिशरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस
बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन. एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी. राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर ओवर द 40 years. जो आपने ग्राफ पे देखा, टेरिटरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस अभी आपने देखी बहुत इंक्रीज हो गई. रीजन क्या है? पॉइंट नंबर वन, in any country, services like education, communication, municipal corporation, defense, transport, bank, insurance, इनकी बहुत ज़्यादा requirement है. And these can be considered as basic services. In a developing country, government has to take responsibility for the provision of these services. First point ये है. Second point, the development of agriculture and industry leads to the development of services. और वो कौन सी सर्विसेज? लाइक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, स्टोरेज है. ये ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द like greater the development of the primary and the secondary sectors, more would be the demand for such services. Third point, as income level increase, certain sections of people they start demanding many more services. आप देखिए आपको वीकेंड्स पे पॉपुलर ईटिंग जॉइंट्स में आपको काफी रश नजर आता है. एक ये ट्रेंड हो गया है और कोविड के बाद थोड़ा मैं कहूँ तो इंक्रीज ही हो गया है. दैट इनकम लेवल इंक्रीज हुई, पीपल दे हैव स्टार्टेड डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज, बाहर जाना, घूमने जाना. एंड इससे टूरिज्म से एक बात मुझे याद आई, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, दैट यू विल बी सरप्राइज टू नोट डाउन दिस थिंग. इन 2021 टू 22 में ऑल ओवर वर्ल्ड में जो टूरिज्म है, सबसे ज्यादा इंडियन टूरिस्ट नजर आए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड. तो टूरिज्म सेक्टर से मुझे याद आया, सबसे ज्यादा इंडियन टूरिस्ट नजर आए हैं. तो शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, ये सारी फैसिलिटीज हैं. इनकम लेवल इंक्रीज होने से इन सर्विसेज पे भी पॉजिटिव उसका इफेक्ट हुआ है. Point number four, over the past decade or so, certain new services, such as those which were based on information, IT sector, they have become very important, these services, and it has been rising rapidly. So in chapter 4, we will take up this. So you must remember that not all of the service sector is growing equally well. Service sector India में employ करता है many different kinds of people. One end there are limited number of services जो employ करते हैं highly skilled and educated workers. At the other end there are very large number of workers जो engaged हैं in services like small shopkeepers, repairs, transport persons, etc. Now there are these people are barely able to manage earn a living कि भी पूरा एक वक्त का खाना खा सके like that. उनके पास कोई और opportunity नहीं है for work, it is not available. Hence only a part of this sector is growing in importance. So dear students, I hope you have understood, and in the next class I will take up from here कि where are most of the people they are employed. और वो आपके लिए एक बहुत मतलब ऐसी चीज होगी जो आपको बड़ा हैरान कर देगी कि भाई आपको टेरिटरी सेक्टर में, पर एम्प्लॉयमेंट टेरिटरी सेक्टर में नहीं है ज्यादा. एम्प्लॉयमेंट इज नॉट इन द टेरिटरी सेक्टर. एम्प्लॉयमेंट कहाँ है वो हम नेक्स्ट उसमें आपके साथ में बात करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में. सो स्टूडेंट्स प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए बिकॉज दे रियली हेल्प मी इन दिस. सो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू कि students and all that please subscribe more and more, and please do comment also in the comment box.